Yes, now we will be starting by first a graph. If we plot a graph between different values of small g with respect to height as well as the depth. So suppose this is a graph which is taking the distance from center of earth. This is the distance from center of earth, and on this y-axis we are taking the variation, that is the changing in g. This is the center of earth, so the graph will be taking this shape, first the straight line up to the maximum height, then it will be a hyperbolic type. So this point, that is at which the g is taking the maximum value, is exactly the surface of earth. So this is holding the coordinate capital R, because as we have gh is equal to g into r square upon r plus h bracket square, and g with depth is g 1 minus d upon r. So when we are going from O to A, it is following this relationship, but when we are going from A to ahead, that is A to B, it is following this relationship. So over here, GD is directly proportional to minus of D, because we are going towards the center of the earth, and over here we are going away from the surface of earth. So GH is inversely proportional to R plus H whole square. So okay, so this is the graph at the surface of the earth, means that this point we are getting the maximum value of acceleration due to gravity, and we can draw for this type of earth. This can be the earth. At surface of earth we are getting the maximum value of acceleration due to gravity. Now, let's assume starting some problems. So, suppose question number 1 is the acceleration due to gravity at height h above Earth's surface is one third the value on Earth's surface. Find h, that is the height, in terms of Earth's radius capital R. So as we are given, g dash is one third of the value on Earth's surface, but we have the formula that gh is equal to g upon 1 plus h upon r bracket square. So over here we can put the value as 1 by 3g. So this is 1 by 3g. Hence GG will cancel. This is cancelled, and now we can cross multiply. So this is 1 plus h upon r bracket square equal to 3. So what is 1 plus h upon r? This is square root of 3. So therefore we get h upon r as root 3 minus 1. So h is equal to r within bracket 1.732 minus 1. Hence we get finally h equal to
r into 0.732, and whatever is the unit, that unit we can take here. Suppose it is kilometer, so we may take kilometer. Okay. Now taking next numerical, which is question number 2. What will be acceleration due to gravity at depth 3200 kilometer from Earth's surface? So for this, the word given is depth. Hence, we have to use the expression for depth. So over here, the expression for depth is GD is equal to G 1 minus D divided by R. So in the given data, depth is equal to 3200 kilometer, and as usual the radius of Earth is 6400 kilometer. Means we can see depth is significant as compared to the radius. So putting the values G 1 minus, no need to convert the units because this is a ratio, 3200 divided by 6200, because both are in kilometer, so they will cut. Now this is cut and it gives 2, so answer G 1 minus half, so it is G by 2. So answer for GD is equal to G by 2. So if we are taking on the surface of Earth, this is 9.8. So GD will be 4.9 meter per second square. Okay. Next question, you may write question number 3. What will be the acceleration due to gravity at 3200 kilometer from Earth's surface? Now definitely this is above, means we have to go height h. If its value on Earth's surface is 9.8 meter per second square, where given radius of Earth is 6400 kilometer. So we have studied two formulae for gravity at height h. One was the general formula. This is r square upon r plus h whole square. But the second formula was applicable only when height is very much less as compared to the radius of Earth. So in this case, as we can see, the height is not very less, although it is significant as compared to the radius of Earth. So we have to apply this first formula. So I can write GH is equal to G R square divided by R plus H whole square. So putting the values G into 6400 upon 6400 plus 3600 and its whole over square. So now this is G into 6400 multiplied by 6400 divided by 10,000 into 10,000. So we can see all four zeros cut
and this gives us G into 64 into 64 divided by 10,000. So we can find the value as we get the final value as GH equals to, if you will calculate this answer, GH is equal to 4.36 meter per second square. So I hope you can do more sums on acceleration due to gravity as height and depth are varied. Now write next factor. Actually we have four factors which affect G. First height, second depth. This we have done in the previous video. Now we are going to do the third factor, latitude or rotation of Earth, and the fourth factor, the shape of Earth. So we are taking this factor in turn now, latitude or rotation. So write question number 3, discuss effect of latitude. So we are given the symbol lambda on acceleration due to gravity, or this question may be discuss effect of spin motion on acceleration due to gravity. So dear friends, obviously this is spin motion of earth. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. सो सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक बातें समझते हैं. जैसे ये है आपके पास अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये है अर्थ का एक्सिस. दिस इज नॉर्थ पोल and it is south pole. So earth अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होती रहती है in the sense west to east with the angular velocity omega. As we have read already in circular motion, omega is equal to 2 pi by t, or this is also equal to 2 pi f, where t is the time period and f is the frequency of rotation. अब जो टाइम पीरियड होगा certainly it will be 24 hours, that is 86400 सेकेंड. तो जब भी आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो that should be put in second probably if it is not given in question. Now आप यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से जब ये ग्रेटेस्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. तो ये जो आपके पास में डिस्टेंस आया, इसको आप बोलेंगे इक्वेटोरियल रेडियस. ठीक है. अब एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी अर्थ के सरफेस पर कहीं भी रख दिया आपने. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ रख दी एक बॉडी, और इस बॉडी का मास है स्मॉल m. आपने इस बॉडी को भी अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो द एंगल बिटवीन दिस रेडियस, दिस इफेक्टिव रेडियस एंड इक्वेटोरियल रेडियस विल बी कॉल्ड एज द लैटिट्यूड. तो ये आपके पास एक न्यू वर्ड ऐड हो चुका है वोकैबुलरी में, विच इज कॉल्ड एज एंगल और लैटिट्यूड. फिर से देखेंगे, एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग
the center of Earth to the body and the equatorial radius is called as the latitude. Now, every body is making its own circle. ऐसे हर बॉडी अपना एक सर्कल बना रही है घूमते घूमते. क्यों? बिकॉज अर्थ तो हर समय रोटेट हो रही है, तो वो बॉडी अपने प्लेस पर रहते हुए भी अर्थ के साथ साथ उसको घूमना पड़ रहा है, मतलब एक सर्कल बनाना पड़ रहा है. तो ये जो सर्कल आएगा आपके पास में किसी भी बॉडी का, इस सर्कल की रेडियस डिफरेंट होगी सारी बॉडीज के लिए. एज्यूम करते हैं हम इस सर्कल की रेडियस को हम सिंबल दे देते हैं स्मॉल आर. ठीक है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्रेश फिगर नाउ ऑन द कंप्लीट स्क्रीन. सो ये मैंने बनाया फ्रेश फिगर. दिस इज अर्थ, center of earth, equatorial radius of earth. This is body. This is capital R, lambda, and this is the circle of body which it has made when earth was rotating about its own axis passing through north and south pole. अब अर्थ कंटिन्यू एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव करती है. सो नाउ वी आर टेकिंग दिस एज द सेंटर ऑफ दिस इफेक्टिव सर्कल. तो ये जो आपके पास सर्कल की रेडियस होगी उसको हम सिंबल दे देते हैं स्मॉल आर. ठीक है. We are taking the radius of this circle as small r symbol. So these two are alternate angle. So this angle is also lambda. Done. अब ये जो बॉडी है वो कुछ फोर्सेस फील करेगी. सो व्हाट आर दीज फोर्सेस? सबसे पहला फोर्स फील करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is away from its center. तो ऐसे आ जाएगा ये फोर्स. This is Fc which is equal to m r radius into omega square. Second force ये feel करेगी towards the center of earth which is the gravitational force where its mass is m. ठीक है. अब आपके पास ये जो स्मॉल आर है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा एंड पोल पर जो स्मॉल आर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज बॉडी इज़ नॉट मेकिंग एनी सर्कल ऑन द पोल. तो जैसे ही आप इक्वेटर टू पोल जाते जाएंगे पहले ये लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा और लास्ट में पोल पर आने के बाद लैम्डा will be 90 degree, and whereas lambda equator was 0 degree. So we can make the parallelogram like this. तो पैरेललोग्राम में ये जो आपके पास एंगल आएगा that will be 180 degree minus lambda. So when we do this derivation completely, we get the value, effective value of G as G minus R omega square into cos square lambda, where omega is the angular velocity of Earth and lambda is the latitude of that object. Okay, so we can see here minus sign except pole because at poles lambda equals to 90 and cos 90 degree equal to 0
सो पोल्स पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, effective value of g, that will be equal to actual g. It means क्या हुआ, पोल्स पर g की वैल्यू मैक्सिमम होगी. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, सो पोल्स पर अर्थ के रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट जैसे ही हम इक्वेटर का डिस्कशन करते हैं, we get lambda equal to 0 degree and cos 0 degree equal to 1. So g dash equal to g minus r omega square. As we can see, this cos square lambda will be 1 on the equator. Hence, we are getting that there is the maximum reduction by r omega square. g की एक्चुअल वैल्यू में से वैल्यू कम हो जाती है r ओमेगा स्क्वायर, और आपको इक्वेटर पर जो वैल्यू मिलेगी स्मॉल g की, वो सबसे कम मिलेगी, विच विल बी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑन पोल्स वी विल बी गेटिंग द वैल्यू 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये दोनों वैल्यूज़ को जब हम कंसीडर करते हैं, so we get the average value as 9.8 meter per second square. अब आता है आपके पास नेक्स्ट एक लॉजिक कि in very important competitives it is asked that what happens if earth stops rotating. कि अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूमना बंद कर देती है तो क्या होगा. तो कुछ बच्चे उसका आंसर देते हैं कि डे एंड नाइट नहीं बनेंगे, 24 आवर्स नहीं बनेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. बट एक्चुअली व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन रेफरेंस टू द ग्रेविटेशन. इसके लिए पूछा हुआ है आपको ये क्वेश्चन. तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है, so omega will be 0, and as we were taking g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda. तो जैसे ही ओमेगा 0 हो जाता है आपके पास g डैश की वैल्यू आ जाती है g. इट मीन्स क्या हुआ, जो माइनस हो रहा था वो अब नहीं हो रहा. तो फिर आपने बोल दिया कि जो बॉडी का वेट है, एपरेंट वेट, ऑब्वियसली this will increase and it will be more than the actual weight felt by the body. Okay, now next case comes, you can write the question again. If g dash equal to 0, then what is omega? So actual where we were taking g dash, it was g dash is equal to g minus r omega square into cos square lambda. Now we are combining two cases. G dash is 0 and obviously the word used with g dash will be the apparent weight, मतलब वो वेट जो बॉडी फील कर रही है, और फॉल्स वेट. तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एट इक्वेटर. So lambda will be 0 degree. So putting this value as 0 and this value as 1, because cos 0 degree is equal to 1. तो हमने पुट किया g डैश को 0, g minus r omega square. So we get g equal to r omega square. So according to the question, the angular velocity square will be g upon r, and hence angular velocity will be square root of g divided by r. Okay, so this is the perfect answer for our question. And now if it is asked again that find time period also, then we can put omega is equal to 2 pi divided by t. So we may get, as we had got the equation, omega is equal to root of g by r.
So we can put omega is equal to 2 pi by t. So t is equal to 2 pi by omega, putting the value 2 pi upon root g by r. So it is 2 pi square root of r by g. So this is the answer for time period on equator when g dash equal to 0. Next point we are taking the effect on acceleration due to gravity due to shape of earth. So this is earth and actual shape I can draw by blue color where the poles are almost flat and the equator is bulged. So when we draw this equatorial radius RE and the polar radius RP, we get that equatorial radius is 21 kilometer more than the polar radius. Hence, as we see the formula, we get gravity on poles is Gm upon Rp square and gravity on equator is Gm upon Re square. Equation 2. Now when we divide gravity on poles by gravity on equator, we get the answer as Re square upon Rp square because they are inversely proportional. So as we get the radius of earth is more by 21 kilometer on equator. So this value or this fraction will be greater than 1. Hence we can conclude that gravity on poles is greater than gravity on equator. So hence experimentally we have got the values as gravity on poles as 9.83 meter per second square and gravity on equator as 9.77. So when we take their average, we get average value of G on the surface of earth, that is 9.8 meter per second square. Hence children, you get only this value of acceleration due to gravity, which is assumed to be constant at all over the surface of earth. Okay, now we are going to do some more numericals. So write next numerical which is based on rotation. What should be? I am writing initials. The angular velocity of rotation of Earth on its own axis, so that the weight of the body on equator becomes 0. This is our question. Now it is given that small g is 10. Obviously I know, you know the unit. Radius of earth is 6400 kilometer. And next sub question is
how many hours will then make a day? This is sub question. So this is the second question. First was to find the angular velocity. Now, as we know the necessary condition, this is Earth. When it rotates about its own axis, it is making day and night, that is 24 hours. Now, if we are checking the equator case, we know that at this point exactly, the weight of the body should be balanced just by the centripetal force. So we can write that Gmm upon r square is equal to m omega square into r. So what do we get? Cancels, is cancelled, and we have got that Gm upon r square is r omega square. And we also know that Gmm upon r square by Newton's law is equal to mg. So over here also is cancelled. So we can see by two equations that we are getting different RHS. So we can equate them in the next step of our solution. So we can have G equal to R omega square. So omega equal to root G by R. So putting the proper unit values, this is 10, 6.4 when R is taken in meter. So it is equal to, when we can get all the values, like this is 10 raised to minus 5 divided by, you can have this value as 64 into 10 raised to minus 1. So it will be square root 10 raised to minus 5 plus 1 upon 64. So this is equal to 10 raised to minus 4 upon 64 whole root. So omega is equal to, after taking square roots, 10 raised to minus 2 upon 8. So this answer will be 1 upon 800. So it is achieved as 1.25 into 10 to the power minus 3, and the unit is radian per second. Okay, this is the answer for omega. Now as we have to find t also. So t is equal to 2 pi upon omega, putting the values of pi as 3.14 and omega as 1.25. Power will go to numerator. We get the answer as 5024 second, which in hour gives as 1.4 hour. तो इस तरह से आपको एक दिन का टाइम कब मिल जाएगा 1.4 आवर. मतलब न ठीक से सो पाएंगे, न ठीक से पढ़ पाएंगे, न ठीक से खा पाएंगे, एंड द डे विल बी 1.4 आवर लॉन्ग. So best of luck for that situation of Earth. So in these type of imaginary questions occur in physics. Next topic, we are going to study gravitational field. So, सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है, फील्ड का मीनिंग क्या होता है. तो आपके पास ये एक बॉडी है एंड दिस इज रादर अ स्मॉलर बॉडी. ठीक है, तो बड़ी बॉडी का मास अज्यूम कर लिया मैंने m, और जो स्मॉल बॉडी है उसका मास एज्यूम किया मैंने स्मॉल m इक्वल टू 1 kg. मतलब जब भी आप फील्ड की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास. तो
तो ये जो मास है कैपिटल एम, obviously by Newton's law it is attracting this small m, लाइन ज्वाइनिंग होगी इसके बीच में और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो स्मॉल एम है कहीं भी रखो आप, मान लीजिए 1 kg मास आपने यहाँ रख दिया, तो आप पहले इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में ये इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। सपोज आपने मास यहाँ रख दिया तो सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे आप, मास का अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। आपने मास को काफ़ी दूर रख दिया, अब आप ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे और फिर ये स्मॉल एम कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे। तो यू कैन ड्रॉ वेरियस डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो 1 kg का मास है ये इसके कैपिटल एम के कारण जितना भी फोर्स फील करता है उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दैट विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू जी एम into 1 लेंगे स्मॉल m के प्लेस पर, डिवाइडेड बाय, इफ वी आर टेकिंग द डिस्टेंस एज वेरिएशन स्मॉल r, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी का। बिकॉज आपने ये जो m था, स्मॉल m था, इसको लेफ्ट में ले लिया होगा। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स अपॉन मास विच इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M divided by r square. Obviously, this is a vector quantity, so you may note down the first point as intensity of gravitational field is equal to Gm upon r square. Then second, intensity of gravitational field is a vector quantity which acts, अब इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर होने के कारण इसमें डायरेक्शन कहाँ होगा, दिस इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बॉडी प्रोड्यूसिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कि जो बॉडी जैसे हमने लिया था कैपिटल एम, तो उसके सेंटर की तरफ ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ इफ वी आर टेकिंग द एसआई यूनिट, सिंस आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, सो एफ की एसआई यूनिट आई आपके पास न्यूटन और मास की एसआई यूनिट आई किलोग्राम। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टेक द सीजीएस यूनिट, दिस विल बी डाइन पर ग्राम। अब बच्चों जल्दी से फाइंड करके देखो डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज m1 l1 t-2 and this is just m1, so we get l1 t-2। अरे ये क्या हो गया, ये तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो इट मीन्स इंटेंसिटी के डायमेंशन सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जैसे हैं। सो अगर हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे, इफ वी विल टॉक फॉर अर्थ सरफेस, वी मे हैव द कंक्लूजन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will be the same the intensity of gravitational field. So this formula on surface of earth is gm upon capital R square. So what is the conclusion? Intensity of gravitational field at a point on Earth's surface. Okay, see this, intensity of gravitational field at a point on Earth's surface is equal to acceleration due to gravity at that point. So आपको हमेशा इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है किसकी तरफ प्रोड्यूस करना है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ body which produces gravitational field. ठीक है, so write one question for this. If capital G equals to
6.67 into 10 to the power minus 11 SI, and capital M is 100 kg. Then find gravitational field intensity at a distance of 7 meter from a body of unit mass due to 7 kg मास। तो आपने फिगर बनाया, ये 7 kg मास है और इससे 7 मीटर पर रखा हुआ है आपने एक और मास विच इज ओनली ऑफ 1 kg। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस 7 kg मास? ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा क्योंकि इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो I is equal to G M upon R square. Put in the values 6.67 multiplied by 10 raised to minus 11, कैपिटल M की वैल्यू 7 kg और डिस्टेंस भी है 7 मीटर। सो दिस इज 7 into 7. So it is cancelled. So what do we get? Intensity is 6.67 upon 7 into 10 to the power minus 11. Now if I am taking it as 66.7, this will be 10 raised to minus 12. Balancing कर लिया आपने. So this answer will be 9 point something into 10 to the power minus 12, and already we have studied that the unit will be meter per second square. So I hope you have enjoyed this video. Thank you.